Hi everyone, welcome to Android Knowledge. In this video, we are going to create login screen. So open Android Studio, choose empty activity, then click next. We'll name it as login screen and keeping the language as Java, then click on finish. This is one of the most popular video on my channel, hence I had to consider this video for explanation. So we will be starting with all the prerequisites such as adding icons, changing the themes and adding colors. So with that said, let's first change the theme. Go to themes.xml and change the theme from dark action bar to no action bar. Because we want our app in full screen mode, hence we will remove the action bar. Go to colors.xml, press Ctrl+D to duplicate the line and I'll name it as purple. And then I'll quickly add hex code for purple, which is 8692F7. This is our hex code for the color purple. Now I'll be adding a background image which I have created in Canva. I'll just quickly copy paste it in the drawable folder. Also, you can download the background image from the description box. I'll be adding two icons. We will use those icons in email edit text and password edit text. So right click on drawable new, then vector asset, then click on clip art. Now for the email edit text, we will type as not user, we will type as person. So select any of the icons and click OK, then next, then finish. Now for the password edit text, right click new vector asset, then click on clip art, then type as lock, select any icon, then click OK, next, and then finish. Lastly, we'll be creating a custom edit text in drawable resource file. So basically हम एक लेवेंडर राउंड बॉर्डर क्रिएट करेंगे जो एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड होगा. ठीक है, इससे हमने नेम दिया कस्टम अंडरस्कोर एडिट टेक्स्ट, देन क्लिक ओके. काफ़ी सिंपल है. एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम ये सेलेक्टर को हटा के शेप देते हैं एंड देन वो शेप को हम रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे. ठीक है, देन उस रेक्टेंगल शेप को हम एक बॉर्डर देंगे जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं. तो स्ट्रोक की विड्थ हम रखेंगे 3dp, विड्थ बोले तो उसकी थिकनेस. ठीक है, थिकनेस दे दिया. देन उसके बाद हम उसका कलर देंगे एज पर्पल. एंड देन उस रेक्टेंगल शेप को हम कॉर्नर रेडियस देंगे. तो उस कॉर्नर रेडियस को हम रखते हैं कुछ 20dp. ठीक है, and with that said we are done with all our prerequisites. Now you can close all the folders as well as the tabs. Now let's move on to activity main.xml. For this video I'll be explaining you the design part as well, but please let me know in the comment section कि तुम्हें डिज़ाइनिंग का भी explanation चाहिए या फिर only logic का explanation. ठीक है, so we'll be using linear layout instead of constraint layout. Now keep the orientation as vertical. So linear layout में ना अगर orientation vertical है तो items एक के नीचे एक आते हैं एक linear form में. ठीक है, then gravity को center दो and background image add कर दो. Then we will be using a card view to give that elevated look. एंड ऑल्सो विल बी यूजिंग कस्टम एडिट टेक्स्ट हियर एज वेल बिकॉज हम चाहते हैं कि वो जो कार्ड व्यू है ना उसे एक बॉर्डर क्रिएट हो पर्पल, इसलिए हमने उसे एज अ बैकग्राउंड भी दिया है. ठीक है, सो अब हमें ना कार्ड व्यू में रेडियस और एलिवेशन ऐड करना है जिस वजह से ये लाइन का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
नाउ कार्ड कॉर्नर रेडियस को आप 30 dp दे दीजिए एंड देन कार्ड एलिवेशन को आप 20 dp दे दीजिए. नाउ इनसाइड द कार्ड व्यू वी विल ऐड अ लीनियर लेआउट अगेन. ठीक है, अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, लीनियर लेआउट या कोई भी लेआउट की नेस्टिंग होना. ठीक है, तो हमने एक लीनियर लेआउट क्रिएट किया वर्टिकल ओरिएंटेशन. अब हम वापस दूसरा लीनियर लेआउट क्रिएट करें कार्ड व्यू के इनसाइड. ठीक है, उसका ओरिएंटेशन भी हम वर्टिकल ही रखने वाले. उस लीनियर लेआउट में हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन्स, जो भी चीज़ें है वो इस लीनियर लेआउट में ऐड होने वाली है. ठीक है, ना सबसे पहले हम ऐड करते हैं टेक्स्ट व्यू, जो हमारी लॉगिन की हेडिंग होंगी. ये हेडिंग है इसलिए इसका साइज काफ़ी बड़ा है, विच इज़ 36 SP. SP स्टैंड्स फॉर स्केलेबल पिक्सल. सो जब भी आप फॉन्ट साइज लिखते हो आपको हमेशा SP ही यूज़ करना है, बाकी सारी जगहों पे आप DP यूज़ करो. Then we will be creating edit text. As I previously said, giving it to the custom lavender border as a background. एंड देन ड्रॉएबल लेफ्ट में आइकन ऐड कर देंगे पर्सन का एंड उसे एक डिसेंट सी पैडिंग दे देंगे. Now copy the entire edit text of email and paste it again. We'll be using the copied code for the password edit text. We need to change few things over here, जैसे कि ID, then hint, then drawable left. And also we'll be adding one more attribute, that is input type, and we will set it as text password. So basically जो आप पासवर्ड में स्टार्स और एस्ट्रिक देखते हो ना, ये वही करता है. Now we'll be adding a button. अब इसमें आई नीड टू पॉइंट आउट टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग ये कि बटन का डिफ़ॉल्ट कलर वही होता है जो आपके थीम्स में प्राइमरी कलर होता है. सो आइदर चेंज योर थीम्स प्राइमरी कलर और एल्स बैकग्राउंड टिंट का यूज़ करो टू चेंज योर बटन कलर. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल वर कमेंटिंग कि उनका ऐप कॉर्नर रेडियस वर्क नहीं करता है. सो ये पॉसिबल है ड्यू टू सबका एंड्रॉयड स्टूडियो का, ग्रेडल का, प्लगइन्स का, ये सब का वर्जन डिफरेंट होता है मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो से. बराबर. सो वो बिल्कुल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सो अगर तुम्हें बटन को राउंड कॉर्नर करना है, सो उसका आइडियल वे है टू क्रिएट अ ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, देन गिव इट अ रेक्टेंगल शेप विद अ सॉलिड कलर एज पर्पल, एंड देन उसे कॉर्नर रेडियस दे दो 20 dp का. एंड देन ये ड्रॉएबल फाइल को आप एज योर बटन्स बैकग्राउंड रख सकते हो. Lastly, I have added text view for redirecting to sign up page, but we have not created any sign up page, so this text view is just for the show purpose. But if you want, you can add intent on it and then redirect it to the sign up page.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन एक्टिविटी लॉजिक पार्ट. बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज़ किया है बिकॉज इसमें कोई डेटाबेस यूज नहीं है, राइट. शॉर्ट में क्या होता है, इसमें विल बी यूजिंग अ प्री डिफाइंड यूज़र नेम एज वेल एज पासवर्ड. सो तुम अपने मिनी प्रोजेक्ट्स या डमी प्रोजेक्ट्स या सिंपल सा लॉगिन पेज यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारे नेसेसरी वेरिएबल्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि एडिट टेक्स्ट एंड बटन. Then initialize all the components which we have used in our XML file. My Android Studio has some kind of a glitch. It always shows error on them, but after invalidating caches ना वो ठीक हो जाता है. So let's not focus on it and move forward. Now I'll be adding a click listener on login button. Get used to this thing that whenever you want to add a click listener on any button, first type the button name, then dot set on click listener, and in the brackets type new, and it will automatically going to show you view dot on click listener. Then click on it and you will get the on click code. Now for the logic part, I have used an if else statement. So what happens now, it will take username and password from edit text, for which I have used get text dot string, and then we will compare it with the predefined string, which is user as a username and 1234 as a password. So होता क्या है कि if our username matches with the predefined username, that is user, and if our password matches with the predefined password, that is 1234, then a toast will appear saying login successful. So it's like कि आपको login में सिर्फ predefined string ही यूज़ करनी है which are user and 1234. मान लो आपने यूज़र नेम में एडमिन लिख दिया, लेकिन predefined string तो यूज़र है, so आपको टोस्ट में login failed बताएंगे. Simple. Now let's run the app and see. यहाँ मैंने यूज़र लिखा है यूज़र नेम में एंड पासवर्ड में 1234 लिखा है. सो टोस्ट शो हुआ लॉगिन सक्सेसफुल. लेकिन अभी मैंने पासवर्ड में इंस्टेड ऑफ 1234 मैंने 1234 फाइल लिख दिया. सो टोस्ट शो हुआ लॉगिन फेल्ड. I hope you understood the logic, and if you did, please like this video, and if you are new to this channel, please consider subscribing to my channel, and I'll see you in the next video.